Hello viewers, I'm your host Pratiksha Mishra with another episode of South Asia Focus. Let's begin the show. The swearing-in ceremony of Indian Prime Minister Narendra Modi for his third consecutive term was not just a momentous occasion for India, but it also showcased the nation's commitment to regional cooperation and global diplomacy. With dignitaries from neighbouring countries in attendance, the event emphasized India's prioritization of its relationship with these nations. As India's foreign policy takes centre stage, guided by the principles of Bharat First and the world is one family, the world eagerly awaits to see how these principles will shape its future interactions. Take a look. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. The swearing-in ceremony of Indian Prime Minister Narendra Modi for his third consecutive term was a momentous and historic event. The event was attended by a wide array of dignitaries, both domestic and international, reflecting the significance of the occasion. The presence of leaders from neighboring countries and the Indian Ocean region emphasized India's prioritization of its relationships with these nations. Prominent guests at the ceremony included Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, Nepal's Prime Minister Pushpa Kamal Dahal, Bhutan's Prime Minister Sering Tobgay, and Mauritius Prime Minister Pravind Kumar Jugnauth. Additionally, the ceremony was graced by the participation of Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe, Seychelles Vice President Ahmad Afif, and Maldives President Mohammad Muizzu. This strong representation from neighboring countries and those with strategic ties to India underscores the depth of regional cooperation and India's commitment to fostering robust diplomatic relations throughout the Indian Ocean region. I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union. S. Jaishankar, who took charge of the external affairs portfolio for his second term, delivered a poignant message emphasizing a strong commitment to improving relationships with nearby countries. Our neighboring relationships will be the first priority, will be the overriding priority of the Modi government. And that is as it should be. India's recent foreign policy has been marked by active involvement, forming strategic alliances, and prioritizing efforts to enhance peace, stability, and economic growth at both regional and global levels. In his address, S. Jaishankar outlined the key principles that will guide India's foreign policy, emphasizing a commitment to advancing national interests while fostering cooperation, inclusivity, and global harmony. Looking ahead, definitely I think the two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam, these will be the two guiding axioms of the Indian foreign policy. As India's foreign policy takes center stage, the world watches closely to see how these guiding principles will shape its interactions on the global stage. With a focus on Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam, India's commitment to advancing its own interests while fostering global cooperation and unity is clear. The participation of leaders from neighboring countries at Prime Minister Modi's swearing-in ceremony signals a shared vision for regional stability and prosperity. As the nation embarks on this new chapter, the world anticipates the outcomes of India's proactive engagement and strategic alliances in shaping a more peaceful and prosperous future for all. Moving on. As Pakistan grapples with economic turbulence amid negotiation with the International Monetary Fund, the country's finance minister, Mohammad Aurangzeb, remains cautiously optimistic. While challenges loom large, Aurangzeb sees potential in the ongoing discussions aiming to bolster the nation's financial stability through policy reforms. With considerations such as increasing the petroleum levy on the table, Pakistan navigates a complex path towards economic resilience. A report.
Pakistan's economy faces formidable challenges amid ongoing negotiations with the International Monetary Fund. Persistent fiscal deficit, driven by a misalignment between government expenditures and revenues, exacerbate the country's financial instability. High levels of public debt, coupled with a widening current account deficit and diminishing foreign exchange reserves, underscore the urgency of external assistance to mitigate the risk of a balance of payment crisis. However, Pakistan's Finance Minister Mohammad Aurangzeb expressed optimism regarding the discussions with the International Monetary Fund, characterizing them as constructive. Islamabad aims to bolster its argument for a fresh bailout agreement through its national budget. IMF का जैसे आपको इल्म है कि वो मिशन यहाँ से होकर गया है, उसके बाद सारी वर्चुअल डिस्कशन उनके साथ चल रही है। इस बजट के सिलसिले में भी जो कुछ सबमिशंस हैं वो उनके साथ इस वक्त बातचीत में ये शामिल हैं, और मैं सिर्फ इस वक्त ये कहूँगा कि मुस्बत पेशरफ्त है, और अभी कोई फ़ाइनल बात हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो ना जाए तो तब तक मैं कोई फिनैलिटी के साथ बात नहीं करना चाहता, अदर दैन द फैक्ट कि अभी तक जो हमारी बात हुई है वो मुनासिब सिमत में जा रही है। The discussions with the IMF present an opportunity for Pakistan, but they come with strict conditions and the need for challenging policy reforms. Successfully addressing these challenges calls for a comprehensive strategy including fiscal responsibility, structural challenges, and specific actions to foster lasting economic growth and enhance the well-being of the Pakistani people. Pakistan is considering increasing the petroleum levy as part of its efforts to address fiscal challenges and enhance revenue streams. ये जो 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है, पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। अगर जो इसमें इजाफ़ा होगा तो वो बतदरीज इजाफ़ा होगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और उस पर भी हम जो साथ साथ मॉनिटर करेंगे जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, और उसके मुताबिक से हम इसको आगे लेकर चलेंगे, ताकि जैसे आपने जिक्र किया उस पर जितना इजाफी बोझ कम हो सके वो हम उस तरीके से इसको मॉनिटर करेंगे। पहले तो ये है कि इसको फेज़ इन करेंगे, और दूसरा इसको लिंक इन करेंगे विद इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। As Pakistan navigates through these intricate negotiations and economic challenges, the road ahead remains challenging yet filled. The failure of the Pakistani economy can be attributed to a combination of systemic issues and external factors. Pakistan has experienced frequent political instability, including military coups, weak civilian governments, and political unrest. Uncertainty in governance has undermined economic planning while hindering long-term growth. Rampant corruption at various levels of government and society has distorted markets and eroded public trust. Weak governance institutions and ineffective regulatory frameworks have further exacerbated economic challenges. Time now for Asia This Week, the stories from across the continent. A fire broke out in a building housing workers in the city of Mangaf in southern Kuwait early on June 12, killing over 40 people. The country's Deputy Prime Minister Sheikh Fahad Yusuf Saud accused real estate owners of violations and greed, saying those factors contributed towards the incident. مع الأسف طمع أصحاب العقارات هو اللي يؤدي إلى هالأمور هذه، وأنا الحين بكلم مدير البلدية من باكر، من الحين أنا أتكلم حق أصحاب العقارات كلها، من باكر أي مخالفة عقارية راح تنزال باكر الصبح، يعني راح يزيلها صاحب العقار من نفسه، ولا أنا راح أعطي تعليمات البلدية الحين باكر يزيدونها. هذا القرار اللي المفروض يطلع من زمان ويتنشطون في البلدية. مع الأسف كان في إهمال من تجار العقارات علشان يعملون مخالفات، وهذه نتيجة المخالفات. اليوم للحين وأنا أكلمكم 41 واحد متوفي. سبب شنو؟ سبب تجار العقارات مع الأسف.
ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये concern of a bigger confrontation between the heavily armed adversaries. In a poignant display of frustration and desperation, former government employees and pensioners in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir have taken to the streets in protest. Their demands are simple yet crucial for their survival amid soaring inflation, an increase in pensions and salaries. However, their cries seem to fall on deaf ears in Islamabad as bureaucratic hurdles and apathy persist. A report. Scores of former government employees and pensioners in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir held a sit-in protest recently to demand a raise in their pensions and salaries from the Pakistan government. The protesters lamented it has become difficult to manage household expenses amid soaring inflation. But Islamabad has remained apathetic towards their plight. They said they have held several demonstrations over the past 1 year, but no official has come forward to even hear their pleas. ये बात हकीकत पे मबनी है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अपनी तरफ से कुछ ऐलान नहीं कर सकते। ये जो मुराद पेंशन की हुकूमत पाकिस्तान ने दे दी और उनका बजट इनको दे दिया गया है, उसके लिए मैं सदीक शाह साहब से, अपने जनरल सेक्रेटरी फरमान साहब से और रमज़ान मुगल साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 5 वज़रा कल आपके कल इजलास में आए थे, आप उनके पास जाएँ, उन्हें कहें कि ये हमारे बुज़ुर्गों के जो पैसे हैं इनको फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। और दूसरी बात जो इन्होंने लिखी है कि अगर पेंशनर फौत हो जाता है तो उसकी पेंशन उसकी बेवा बेटी को दी जाती है, उसकी बहू को ट्रांसफ़र की जाती है, उसको बेवा को की जाती है। ये कानून है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कानून है, उसी के तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत में तमाम पेंशनर और कानून है, तो ये उनको ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अगर ये यहाँ पे नहीं हो रही, ये हमारे बुज़ुर्गों का मुतालबा है, तो फौरी तौर पे आज़ाद कश्मीर जम्मू रियासत को इस पर अमल दरामद करवाना चाहिए। The protesters also demanded implementation of a law that in case a pensioner passes away, his pension should be transferred to his widow or daughter. They decried the bureaucratic blockade that has led to a delay in addressing their demands. आज तो जिस अफसर को बात करो तो एकदम मतलब वो दम दबाकर भागने की कोशिश करेगा। वो ये कहता है कि बस मुझसे कोई ना पूछ ले, मैं किसी को कुछ ना बता दूं। ये अब ये सूरत हाल जो हमारे सामने है, हम देखो रोडों पर बैठे हुए बूढ़े बैठे हुए हैं, हमें दुनिया गुजरने वाली देख रही है, हमारे अकुरानों को ये याद नहीं आ रहा, ये ख्याल नहीं आ रहा यार इनको सुनने से ये कहते क्या है। अगर इनकी बात जायज़ है इसको की जाए, अगर इनकी बात नाजायज़ है इनको मुतमिन किया जाए, बाबा ये आपका मामला दुरुस्त नहीं है, इसको इस तरह दुरुस्त करें। The protesters blamed instead of providing any aid to the people in the backward region, economic losses faced by Pakistan due to policy paralysis
are also being compensated from territories under its illegal control. And now shifting our focus to Varanasi, an ancient city with a profound spiritual significance and a renowned culinary heritage. This historic city, renowned for its riverfront ghats along the sacred Ganga, presents a diverse array of flavors that mirror its lively culture. Delving into Varanasi's bustling streets unveils a treasure trove of culinary customs encapsulating the city's enduring allure. Take a look. As the first rays of sun paint Varanasi's ghats in golden hues, the aroma of freshly brewed tea fills the air, marking the start of a new day. For the people of Varanasi, tea is more than a beverage. It's a symbol of warmth and hospitality, integral to daily life. Whether enjoyed at home or at bustling tea stalls, each sip carries a sense of tradition and connection. A must-mention is Lakshmi Tea Stall near the famous Kashi Vishwanath Temple. Established in 1958, the tea shop is well known for its toasted bread with butter and cream, perfectly paired with a cup of tea. बनारसियों के लिए चाय अमृत की समान है। जैसे चाय पान सुबह मॉर्निंग में पूरी सब्जी खाने के बाद जैसे नाश्ता वास्ता कर लिए तो फिर उनको चाय पान चाहिए ही। और जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं वो भी देख के यही सब हिसाब से चलते हैं, खाते पीते हैं। और हमारे ये दुकान जो लक्ष्मी चाय वाले हमारे पिताजी खोले हैं और इन्हीं ने चालू किया, इन्हीं के नाम से आज मशहूर हो गया। इन्हीं के नाम से लक्ष्मी चाय वाले को, उन्हीं का नाम था लक्ष्मी। Venture into the bustling lanes of Varanasi and you will encounter the irresistible aroma of freshly fried kachoris or deep-fried breads paired with flavorful potato curry. The hot dish combined with sweet jalebis or funnel cakes showcases Varanasi's culinary prowess, offering a symphony of crunch and spice. Rajesh Gupta's Madhur Jalpan, a 75-year-old shop, serves these streets freshly fried in desi ghee or clarified butter. हमारी शॉप 1953 से है, 75 ईयर प्रोग्रेस इस समय चल रहा है। थर्ड जनरेशन हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं और ये बनारस का सुबह का ब्रेकफास्ट है। ये कचौड़ी है, उसके संग जलेबी है, छोटी आलू कचौड़ी, बनारसी आलू कचौड़ी, ये चलती है बनारस में। हमारे यहाँ शुरू से देसी घी का है और शुद्धता पे हम लोग ध्यान देते हैं और हमारे दादाजी का स्थापित है, हम लोग तीसरी पीढ़ी उसको स्थापित चला रहे हैं उसको। Amidst the heat of the day, a glass of fodi lassi or a flavored iced yogurt drink provides a refreshing escape. Served in earthen cups or tall glasses, lassi embodies Varanasi's hospitality with a taste of comfort and indulgence. The most famous spot is Blue Lassi in Vishwanath Street, where owner Chanchal adds a special touch with fruit infusions. The cozy blue-walled shop is adorned with pictures and notes from guests. शॉप 96 ईयर ओल्ड है। ये पहले मेरे दादाजी के नाम पे था, पन्ना लाल लस्सी वाले, लेकिन वेस्टर्न लोग बोल नहीं पाते थे। एक साउथ कोरियन लेडी आई थी जिन्होंने पूरा इसका इंटीरियर व्यू देखते हुए इस शॉप का नाम ब्लू लस्सी शॉप रखा हुआ है। और जो आप पीछे फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये मेमोरीज के लिए लोग लगाते हैं कि हम यहाँ विजिट किए हुए थे। हमारे यहाँ 120 तरह की लस्सी बनती है और जिसमें मिक्स फ्रूट, ड्राई फ्रूट, रबड़ी, बनाना, कोकोनट, चॉकलेट, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी ज़्यादा फेमस है। As dusk descends, Varanasi streets come alive with the tangy aromas of chaat, a bold, spicy snack made with fresh tomatoes, onions, spices and lemon. Kashi Chaat Bhandar, an iconic eatery, has been serving its famous chaat for decades, offering an authentic taste of the city. ये हमारी शॉप जो है हमारे पिताजी का स्थापित है। ये सन 51 से चालू है, करीबन 65 साल हो गया दुकान चलाते हुए। 65 या 70 हो गया होगा। और ये हमारी दूसरी पीढ़ी है। यहाँ का जो टमाटर चाट है बहुत फेमस है। यहाँ लोग टमाटर को जो खाते हैं
लोग एक दूसरे से तारीफ करते हैं कि ये यहाँ बनारस जाइएगा, यहाँ का टमाटर चाट जरूर खाइएगा। बहुत बढ़िया, बनारस को बार बार आने का दिल करता है। मोदी जी ने इतना अच्छा काम करा दिया है, कॉरिडोर इतना अच्छा बन गया, मंदिर की जो पहले संकरी गलियाँ थी आज देखने का हर पल दिल करता है वहीं बैठे रहे। और फिर काशी आगे काशी चाट पे ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए काशी चाट पे आगे काशी चाट खाने आए हैं। Varanasi, being a hub of religious tourism and ancient heritage, attracts countless visitors from India and abroad. Amidst the spiritual allure, its culinary treasures stand out, offering a memorable aspect of the visit. From traditional tea stalls to iconic eateries serving flavorful delights, Varanasi's food culture enriches every traveler's experience. Varanasi, with its rich spiritual history and diverse culinary scene, invites both seekers of enlightenment and food enthusiasts alike. And with that, we come to the end of this week's episode. See you next week. Goodbye and take care.